everyone to the MBA Litmus channel. I'm hoping that you are all keeping well. And in this session, we are talking about Tier 3 MBA. What's the kind of salary? Is the ROI and the overall experience worth it? Welcome everyone. This is your friend and guide Sudhanshu Can 9.7 Quants 100 IIM Lucknow और इस सेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं टीयर 3 कॉलेजेस के बारे में. सो व्हाट आर दीज टीयर 3 MBA कॉलेजेस? कौन से कॉलेजेस आते हैं इस लिस्ट में एंड क्या इन कॉलेजेस में जाना सेंस बनाता है? What should you do if you have a tier 3 college in hand? Should you go? Should you not go? How should you take a decision? इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे. क्या टियर 3 में जाने के बाद एक डाउनफॉल और फाइनेंशियल ट्रैप आपका इंतजार कर रहा है? आइए समझते हैं इस वाले सेशन में. लेट मी क्विकली गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन. आई एम होपिंग एवरीबॉडी इज डूइंग फाइन. लेट्स गेट स्टार्ट. लेट मी क्विकली share my screen with all of you. I have some analysis over some of the key tier 3 colleges that are there. Let me share my screen with you and then let's go through these very important colleges. Should give you a very clear and a quick sense of what are these colleges and कैसे हम इन colleges को analyze कर सकते हैं. देखो सबसे पहले I'm going to look at a lot of these colleges, but दो तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हो whether it is worth it or not. Obviously, batch size is an important parameter. Then you have fees. Aside that, you have average or median CTC. And then a little bit about the brand strength, right? Location also to a certain level. So 5 important elements: batch size, fee, average or median CTC, location and brand. So those are the 5 elements. From a quantitative standpoint / qualitative standpoint, you could also add major roles, but primarily you will have rather sales oriented role in these colleges is what you will going to find out. Okay, now let's start. सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों KJ Somaiya. If I talk about KJ Somaiya, you have slightly higher batch size. So you typically you have anywhere between a 600 to 700 is what you are going to look at, and then obviously a 20 plus in terms of fee also. If I look at the average hovers between 11 and 12, again that's the kind of a number that you're going to get. Location is Mumbai. That obviously is an advantage. You're going to have sales, management trainee kind of roles that are there in KG Somaiya. Okay. If I talk about, let's say, another institute called Wellington Institute of Management, again, you have close to between 200 and 300. That's the batch size you're going to have. Anywhere between 15 to 18 is what you're going to be spending here. The average / median hovers between 9-10 lakh rupees in terms of CTC, right? Not very encouraging for sure. And if you look at the locations, again, you have Mumbai and Bangalore. Brand strength slightly moderate. You will have some marketing and operations related roles coming up. Retail is also something which you will see in Wellington Institute of Management. Okay. What else we have? If I talk about another college called इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BHU, IMS BHU, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता रहता है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ ROI, बिकॉज आपका जो फी है वो ऑलमोस्ट आपका negligible as compared to other colleges. So you have approximately 1.5 lakhs of spending, nearly 100 seats, an average CTC between 8 to 10 lakhs. Considering almost negligible investment, I think ROI यहाँ पे काफी बढ़िया है. लोकेशन भी बहुत बढ़िया है. वाराणसी का लोकेशन है एंड काफी मजे आ जाएंगे आपको अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ जाते हो. So I'll say if I compare to some of the others like KJ Somaiya or Wellington, going to IMS BHU will make much more sense because you're not spending a lot also, right? You're not spending, like loads and loads of money. आपका return कम है तो आपका investment भी कम है, right? Some basic consulting roles, analyst roles, BFSI roles is what you're going to see in this college. Then you have, Birla Institute of Management Technology, BIMTech. If I talk about BIMTech, again, आपका close to 500 to 550 odd seats here. Again, around 15 lakhs is what you are spending here. An average around 10 lakhs. And if I look at, this is again based out of Noida. You have sales and marketing primarily, and insurance oriented roles is what you're going to get here. Another important college in this segment. So some of the colleges that I would
recommend if you have to go, अगर टीयर 3 में ही तुमको जाना है तो आई थिंक IIMS PHU एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज इसके अंदर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मान ले कि थिंग्स डू नॉट वर्क आउट इन आवर फेवर, तो भी चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में रहती हैं, मतलब दे डू नॉट गो आउट ऑफ योर हैंड। अगेन अनदर कॉलेज जो मैं बोलूंगा जो आप जा सकते हो टीयर 3 के अंदर, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब आप फिर से रिपीट नहीं कर सकते हो, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, तो अनदर कॉलेज जो कि आप कंसिडर कर सकते हो इज इरमा। इरमा के अंदर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल आपका 300 ऑड सीट्स, करीब करीब 17-18, ओवरऑल 20 lakhs टाइप आपका इन्वेस्टमेंट है, 14-15 के आसपास आपका एवरेज यहाँ पे चलता है। नीश इन टर्म्स ऑफ रूरल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा कॉलेज बनता है। एंड यहाँ पे आपको काफी हद तक जॉब सिक्योरिटी तो है, बिकॉज नीश है, बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं नहीं जो रूरल मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, XIMB एंड अ फ्यू अदर आर देयर। तो रूरल जो रोल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमूल टाइप की कंपनी हो गई, अ लॉट ऑफ डेयरी, अ लॉट ऑफ कोऑपरेटिव एग्री बिजनेस ओरिएंटेड रोल्स जो हैं, वो आपके इरमा के पास सीधे चले जाते हैं विदाउट अ लॉट ऑफ डिबेट और डिस्कशन। तो काफी हद तक रूरल वाले जो रूल्स हैं उसमें मोनोपोली है। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या आप एग्री बिजनेस एंड रूरल ओरिएंटेड रोल्स करना चाहेंगे। फ्रॉम अ लोकेशन स्टैंड पॉइंट हो सकता है वो आपके लिए डिसएडवांटेज बने, लेकिन प्लेसमेंट वाइज सेफ रहेगा। आई एम होपिंग कि समझ में आया। उसके बाद एक और कॉलेज है जिसके बारे में जनता बहुत बढ़िया बात करती है, अनदर कॉलेज जो कि आप टीयर 3 में से कंसिडर कर सकते हो इज यूबीएस चंडीगढ़। यूबीएस चंडीगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपका ROI काफी हद तक सिक्योर रहता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सो द बैच साइज इज नॉट वेरी बिग। ठीक है, आपका फॉर एग्जांपल 180 टू 100 ऑड स्टूडेंट्स, approximately आपका less than a lakh is what you are spending here, and again 10 to 12 lakhs, median approximately 10 lakhs के आसपास। तो बहुत ज्यादा आप यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकते हो। यू विल नॉट एक्सपेक्ट कि भाई आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल 50 लाख का CTC मिल जाएगा, ये नहीं होगा। पर एट द सेम टाइम आपका ROI बहुत अच्छा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप बिना लोन के करना चाहते हो, तो यूएस चंडीगढ़ इज अ गुड आइडिया। हाई ROI है, एक्सपोजर थोड़ा लिमिटेड रहेगा। BFSI IT इस टाइप के रोल्स, कंसल्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइप के रोल्स यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे देखने को। सो दीज आर सम ऑफ द सेफ कॉलेज जो कि आप टीयर 3 के अंदर देख सकते हो। इफ आई Again, if you look at BITS Pilani, again, you will have a limited number of seats, approximately 15 odd lakhs of spending, 11-12 lakhs of returns in terms of your CTC. I would recommend that if you have other options, you can go with other options yet to mature, has to take a lot of time to again sort of come to the forefront. Talking about some of the other ones, NMIMS Bangalore, you have approximately again 240 is what they are looking at, 22 lakhs for 2 years. So is that's the kind of fee that you're looking at. And if I look at the package, again, anywhere between 10 to 11 lakhs is what you are looking at. And you have Bangalore. If you have NMIMS Mumbai, that's a better option. But Bangalore, not so good. If you do not have any other options, you might as well decide to take another year, work harder, and come back stronger. Right. Similarly, is my opinion for NMIMS Navi Mumbai also. Again, the investment is on the higher side. Around 20-25 lakhs is what you are spending here. The batch size is relatively smaller as compared to NMIMS Mumbai, but again, the placement stats have not been very encouraging. 50-60% people getting placed is what students have been reporting, and that too around 8 to 9 lakh rupees. Not very encouraging for sure, right? So again, NMIMS Navi Mumbai, if you have, you can absolutely skip that. Not a very good idea to actually take it. If I talk about again some of the other colleges like IMT Hyderabad, you have again 15 to 16 lakhs is what you are investing here, 300 odd seats, approximately 9 lakhs in terms of average CTC or median CTC, based out of Hyderabad. Again, sales and distribution oriented roles, some marketing oriented roles is what you're going to find here. Talking about IMT Nagpur, again 350 to 400 odd seats here,
approximately 16 lakhs of investment, 11 lakhs approximately of CTC that you are going to get here. I'd say again IT oriented, BFSI oriented roles is what you're going to find predominantly in this college. Talking about again NMIMS Indore. NMIMS Indore again approximately looking at 20 lakhs of investment, 100 odd spots, and then you have approximately 10 lakhs is what you are going to generate from here. Not a good ROI for sure. So if you have this, you can absolutely skip that. Talking about some of the other colleges like SIOM. SIOM is a decent option. So if you have SIOM and if you are somebody who has, let's say, an engineering background, operations background, productions background, you can absolutely look at it. राइट सो SIOM नासिक को भी आप देख सकते हो अगर आप ऑपरेशंस ओरिएंटेड हो रिलेटिवली सेफ कॉलेज है यहाँ पे भी अगर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है ROI बहुत अच्छा नहीं है लेकिन सेफ है कि 13-14 लाख 13-14 लाख रुपीस में आप निकल जाओगे यहाँ पे और ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तो ऑपरेशंस सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स प्रोक्योरमेंट डिमांड प्लानिंग इस टाइप के रोल्स में अगर आप जाना चाहते हो तो SIOM नासिक इज अगेन अ कॉलेज जो कि आप कंसिडर कर सकते हो again SIDTM Pune if I talk about near about 150 students approximately 17 to 18 lakh rupees of investment 12 lakh rupees approximately of CTC niche of telecom digital टेलीकॉम आईटी इस टाइप के रोल्स आपको अगेन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर टेक ओरिएंटेड हम बात करें ज्यादा आपको टेक ओरिएंटेड रोल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं again talking about SCIT Pune approximately 180 11 to 13 lakh rupees approximately 12 lakhs का median यहाँ पे and if I talk about the roles here also IT analytics oriented roles data science oriented information security oriented roles is what you want to look at. Talking about SIBM Bengaluru, fee is on the higher side, approximately 250 to 300 odd seats, approximately 13 to 14 lakh in terms of CTC, based out of Bengaluru. Again, the ROI is not so amazing. So if I talk about some of the safe bets that you have, I'd say SIOM from an operations is quite safe amongst the tier 3 colleges. If I talk about, you have UBS Chandigarh quite safe, you have IRMA again very safe, and again IMS BHU is also quite safe. As compared to everything else is risky. If you're taking an education loan and getting into a tier 3 college might become very difficult for you later on in terms of repaying the loan and coming back and standing on your feet. So if you have a tier 3 convert, I would recommend reconsider. You can connect with us at the contact given in the description. And if you have any queries with respect to whether a certain college makes sense for you, you can always connect with us and have a discussion. As far as tier 3 is concerned, remember if the CTC is around 11 to 12 lakhs with 9 lakhs of fixed, 2 to 3 lakhs of variable, वो 3 लाख वेरिएबल जो है वो आपको साल के एंड में मिलेगा जो कि आपके और कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा. इन दोनों में से कोई भी एक खराब हुआ तो वेरिएबल के ऊपर आंच आ जाएगी. तो इफेक्टिवली सिक्योर्ड इनकम आपका कितना है 9 लाख रुपीस या 8 लाख रुपीस. 8 to 9 लाख रुपीस को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको पता चलेगा कि भाई 70 to 75,000 आपको इन हैंड बन रहा है. टीयर 3 में अगर आपको 70 to 75,000 रुपीज इन हैंड पर मंथ बन रहा है और अगर आप मुंबई में रह रहे हो अगर आप गुड़गांव में रह रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज उस सिचुएशन में EMI पे करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो इफ यू आर गोइंग टू अ टीयर 3 कॉलेज इफ यू डू नॉट हैव एन एजुकेशन लोन that is okay, not great because you can still take a chance and prepare again. But some of these colleges अगर आपके पास बिल्कुल chance नहीं है, if you do not want to repeat, but if you have these safer bets, you can go for these safer bets for sure. For any specific discussion, do let us know. If you would have any questions, do drop in the comments. Do like the stream if you feel that such sessions are helpful. And I'm going to be here again very, very soon to take up any queries that you might have with respect to college selection, CAT preparation, and anything with respect to MBA. Thank you so much, everybody, for joining in. You all have a great evening. God bless. Take care, and bye-bye. Welcome to the MBA Litmus channel. I'm hoping